Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कह नहीं सकता मैं क्या सहता हूँ छुपा कर एक ऐसी आदत है मेरी. I am a third generation Indian Chinese, right? लेकिन ये 50,000 बार बोलने के बाद भी लोगों को नहीं पता है. मुझे उनसे बिल्कुल भी गिला नहीं है जो मुझसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछते हैं कि where are you from? Nepali, I could be Japanese, I could be Chinese, I could be from the mountains. टोन में समझ में आ जाता है. There have been many concerts in which I've been there. Everybody is loving it, everybody is very pure and nice. And कहीं से कुछ कोई चिल्ला देता है, वो ऐसा कुछ सुनाई देता है. So my new song झूठी चाय, मैं चाय पीते हुए उसके बारे में बता रहा हूँ. चाय में तेरी मैं छूट गया, मैं तो वही उस प्यारे में, तू ही था जो मुझसे रूठ गया. Hello Chang, welcome to India Forums. Thank you for joining us. It's my pleasure. It's my pleasure to be here. मैं India Forums के interrogation center में बैठा हूँ और मुझे बड़ा मजा आने वाला है आज यहाँ जवाब देने में. Hoping so. First of all, how are you? How's everything? Everything is great. I am doing well. I am in a bit of a creative phase right now जहाँ पे और गाने बनाने का मन कर रहा है और बहुत सारे ideas आ रहे हैं. So it's always a very good phase to be in and generally at peace. Okay. Starting off, your journey from dentist to a singer and then actor is quite unique. Yeah. Can you share that process or that transition into the entertainment industry? Well, a part of it is not as unique anymore क्योंकि मुझे जब बाद में पता चला कि मेरे जैसे और भी डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं जो म्यूजिक में आ चुके हैं. Specifically अगर एक और डेंटिस्ट का लिया जाए तो Nikita is a friend of mine. She's also a very fabulous singer. She's also from a dental family. Yeah. But I think what sets me apart again is that I've also gotten into acting and hosting, and that has really made it very very unique. मेरे लिए बहुत ही amazing इसलिए भी था because I am actually full time. I'm the first person from our community to be in this industry, and it is a very big deal because हम एक छोटी सी community है and हमारा ऐसे in performance arts, in cultural aspects में बहुत ज़्यादा representation नहीं. We're mostly working people. We're mostly either dentists or restaurateurs, या फिर leather business में या salons हैं, beauty parlors हैं, या बहुत और सारी चीजें हैं. But in the entertainment industry, it is a very very special privilege that I've had. I've been very lucky कि मुझे इतने अच्छे मौके मिलते गए हैं. So when you speak about being at the right place at the right time and having a lot of luck with you, वो मुझे बहुत मिला है और उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. So I'm really glad and I'm really proud of being where I am today. Okay, आपने अभी बोला कि आप lucky feel करते हो और आप एक ही जन बिलोंग करते हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. वैसे पहले से ये रहा है कि I think जितना मुझे याद है कि people used to say there's only two career options, that is either being a doctor or engineer. Yeah. So did you face any such comments or something? यार so मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया. थ्रू द स्कूल इयर्स आल्सो दे वुड ऑलवेज टेल मी कि वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट कि हमने आपको वो संस्कार दिए हैं, वो वैल्यूज दिए हैं और आप भी हमारी पोजीशन समझते हो कि वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू गिव यू अ गुड एजुकेशन. बट ये कभी भी एज अ क्या कहते हैं, इट नेवर यूज्ड टू कम एज एन ऑब्लिगेशन कि हम तुम्हें ये सब दे रहे हैं तो तुम्हें भी वापसी में इट वाज नेवर लाइक दैट. आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पेरेंटिंग जहाँ पर आप बहुत अच्छे वैल्यूज दो और जो बच्चे हैं वो खुद ब खुद समझ जाए कि इट इज माई ड्यूटी. कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा, बट इट इज माई ड्यूटी टू डू वेल फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर द कम्युनिटी. एंड उसी तरह से ये चलता रहा है. हमारे में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऐसे हम नहीं देखते. हमारे भी आई वुड से दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन व्हिच चाइनीज एंड इंडियन कम्युनिटीज आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ फैमिली वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ करियर गोल्स, इन टर्म्स ऑफ करियर ऑप्शंस. तो हमारे में भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो जिस क्लैन से मैं बिलोंग करता हूँ वो वही प्रोविंस से. तो हमारी जो कम्युनिटी है हमने ज़्यादातर ईदर ब्यूटी पार्लर्स फॉर द वुमेन, डेंटिस्ट्री विच गोज बोथ वेज, एनीबडी कैन डू इट, एंड कुछ लोग रेस्टोरेंट्स भी खोलते हैं. सो हमारे भी ऐसे ही है कि बड़ा बनेगा तो हाँ दांत ही उखाड़ेगा, बड़े बनेंगे तो सलोन ही खोलेंगे, खाना ही खिलाएंगे. बट द एंटरटेनमेंट फील्ड इज नेवर पार्ट ऑफ दैट ऑप्शन. Because it is a risky business at the end of the day. It is a volatile business. But my parents have always given me that freedom. 10th तक जब तक पहुँचे बहुत ज़्यादा freedom थी. पढ़ो, लिखो, खेलो, music भी करो, art भी बनाओ. Everything is fine as long as you're working hard and you are just being a good person. And
plus 2 में obviously then you have to start making those decisions कि अब मैं ये लूँ या ये लूँ. I don't know what the current system is, but हमारे लिए एक point of time के बाद it would switch over into commerce or science. Yeah. And उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी मैथ्स बहुत खराब थी, तो मैं कॉमर्स साइड पे जा ही नहीं सकता था. So all those things I never even thought of कि these are the kind of professions I could do. So I automatically took science. Okay. And maybe it was also kind of a divine intervention because my father, my entire family is from a science background. They're all dentists. So कहीं ना कहीं एक वो रुझाव अपने आप और वो मजबूरी भी एक बार अपने आप चली गई वहाँ पे. And I really enjoyed it because science by itself also has a lot of art in it. Yes. And initially it used to just be drawing diagrams. And मुझे वो बहुत पसंद आता था. मैं बहुत अच्छी तरह मुझे extra marks उसके मिलते थे. But उसके अलावा I remember just being fascinated by how things work, how the human body works, how all the animals and plants that we are studying, उनकी functioning क्या है. So a lot of curiosity जो हमारी creative arts में भी होती है, वो मैंने वहाँ पे पाई. And वहाँ से फिर I think pressure started only after plus 2 because then you have to now आपकी chill zone चला गया है और years चले गए. Now you have to choose as to what you're going to do. So that is when I took the decision. Like मेरे father ने तब मुझसे पहली बार पूछा था कि what do you want to do? Yeah. Where do you want to go? Because we'll support you with that. And I was not sure. So he asked me कि क्या आप dentistry करना चाहोगे? Because that's already there in the house. And I said fine, let's do it. So I was just going with the flow. मेरी जिंदगी में यही रहा, मैं फ्लो के साथ चला जाता हूँ, इसलिए मैं कभी डेंटिस्ट हूँ, कभी सिंगर हूँ, कभी एक्टर, कभी होस्ट हूँ. एंड बहुत मन लगा कि डेंटिस्ट्री की, बहुत मज़े आए, बहुत प्रोफेसर ने बहुत टॉर्चर भी किया, लेकिन बहुत कुछ सीखा. पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त बहुत संतुष्टि भी मिली. दैट यूज्ड टू एक्चुअली बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, जो मुझे उतने साल पहले का याद है कि जब आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से they can improve their oral hygiene, कैसे मैं उनका दर्द हट सकता हूँ. But then the switch over also happened just as suddenly, that entire going with the flow. So the pressure has never been there. In fact, with everything throughout the educational phase, the academic phase, my parents have supported me. And जब ये switch over हुआ, then also they have really supported me. Yeah, so you said like your parents were supportive. Do you think that, after social media, people, just connected to you? So afterwards, did you face any people commenting on such things? कि आप ऐसे कैसे छोड़ दिए ये actually social media से पहले की भी बात है कि people used to ask me. Many people in my family have asked me and it's justified. Yeah. Obviously अगर आप 5 साल पढ़ाई कर रहे हैं and काफी खर्चे होते हैं, काफी sacrifices हैं उसमें, आपने जी जान लगाई है, मैंने तो बहुत जी जान लगाई, मुझे पता है. Yes, actually. But उसके बाद जब वो shift होता है, there will be questions and I think collectively मेरे और मेरे parents के बीच में ये बात थी कि उस वक्त हम genuinely इतना long term नहीं सोच रहे. I was thinking that I'll go on this show and I did not know how long it would last. Like maybe एक हफ्ता, एक महीना, कुछ महीने, उसके beyond सोचा नहीं था. And my parents were of the thought कि even if he does go further, there will only be a certain amount of time. क्योंकि we are also coming from a certain mindset जहाँ पे हमें उस वक्त confidence नहीं था कि मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा दिखने वाला बंदा from a different community, but who speaks very good Hindi and sings very good Hindi, हमारी longevity क्या हो, ये हमें नहीं पता था, ये हमें confidence नहीं था उस वक्त. हमें लगता था कि यार the show is called Indian Idol and even though I'm as Indian as they come, right? But लोगों के नजरिए में वो शायद ना हो. तो at the end of the day, it's a show that's run by the audiences. It's a show that's run by their vote, their choices. उनकी emotions किसके साथ attached हैं. तो हम सब ये सोच रहे थे कि हाँ थोड़ा जाएंगे, enjoy करेंगे, वापस आ जाएंगे. At least it will be that experience that you will not regret missing later on. At least you went for it. And चले गए, ये सब हो गया, switch over कर दिया. तो सवाल बहुत हुए, लेकिन उनको हमने यही कहा कि short term है. लेकिन वो short term, long term होता गया. Long term it's now been 16 years. And now nobody asks. Now every time, even those family members, they ask me, what is the next project you're doing? We are really excited to see. Okay, while having this conversation, I got to realize that the love for the world of dentistry. So, do you miss it? Do I miss it? I do miss dentistry. I don't miss my college days that much. I was just having this chat with my
फ्रेंड yesterday, मेरे बैंगलोर में एक बहुत अच्छी डेंटिस्ट फ्रेंड है, सेम बैच, और हम दोनों ने इक्वली बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम भी किया है डेंटिस्ट्री में, एट द सेम टाइम हमने बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी सहा है, राइट? एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हर हाउ आवर प्रोफेसर्स दे वर सो गुड टू अस एट टाइम्स, एंड शी इज लाइक, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था यार, नहीं तो क्या मुझे ही ऐसा लग रहा था? सो there are a lot of, I would say, predominantly very very good memories of college, but there are certain things जो कहीं ना कहीं एक impact छोड़ के चली जाती है. Certain professors, the way they are with you, we did have some very very strict professors, and at that point of time we couldn't understand why they were so strict. Now in retrospect you understand कि ज़रूरी होता है. You're not just creating, how do I say, in any professional course, जब भी आप किसी को एक particular चीज़ के लिए train कर रहे हैं, that is a very important responsibility. अभी आप यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आपको ठीक से ट्रेन ना किया होता, या अगर मुझे अपने क्राफ्ट में ठीक से ना ट्रेन किया गया होता, तो चल जाता है. You know, errors इधर उधर एडिट में संभाल लेंगे, चलो हो गई गलती, कोई बात नहीं. But with engineers, with doctors, we are going forward to doing things that will impact society as a whole, and it will go beyond just खुशियाँ और गम or entertainment. It will go to diseases, it will go to overall wellness, it will go to structural integrity. तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कभी कभी मिस करता हूँ कि what I do right now is amazing, but what I did was very noble. It was a very noble profession. Yes. Talking about your singing passion, would like to take this opportunity. Could you, dedicate a song that would dedicate your life journey or your life Oh, song name? ऐसे वर्ड, ऐसे लिरिक्स वाले गाने ढूंढने पड़ते हैं. Also, you need to sing that, please. मैं लिरिक्स सोच रहा हूँ उसके. नहीं रखता दिल में कुछ रखता हूँ ज़ुबां पर, एक ऐसी आदत है मेरी, रह नहीं सकता मैं क्या सहता हूँ छुपा कर, एक ऐसी सोहबत है मेरी, साए में छाए रहता हूँ, आंखें बिछाए रहता हूँ, जिनसे मिलता हूँ. We should do this again because मैंने सारे lyrics mix up कर दिए. And which is why the song does not make any sense if I sing it like that. Sorry about that. मेरे lyrics का खेल बहुत खराब है. आप मेरे दोस्तों से पूछो. Actually, let's just do another song instead. Now we get the right lyrics. नहीं रखता दिल में कुछ रखता हूँ ज़ुबां पर, समझे ना अपने भी कभी, कह नहीं सकता मैं क्या सहता हूँ छुपा कर, एक ऐसी आदत है मेरी, हो सभी तो है जिनसे मिलता हूँ, सही जो है इनसे कहता हूँ, जो समझता हूँ मैंने देखा नहीं रंग दिया, सिर्फ अदा पर एक ऐसी चाहत है मेरी, हो बाहरों के घेरे से लाया मैं दिल सजा कर, एक ऐसी सोहबत है मेरी. Wow, thank you so much. Thank This you. was a great experience. और यहाँ के acoustics बहुत अच्छे हैं, बिना कुछ जोर दिए बहुत अच्छा लग रहा है गाना. Okay, now moving on a very serious note. You have been open about dealing comments and prejudices regarding, facing racism. Yeah. So, how do you handle such things? I have a very light approach to it. Yes. Because I believe that जो मैं as racism face करता हूँ, it is a form of trolling. Right now, what we know as trolling right now. Different kinds of people face different kinds of trolling. किसी को body shaming किया जाता है, किसी को just for being somebody's partner troll किया जाता है, किसी को political affiliations पे किया जाता है. For me, mostly it comes down to my appearance, to where I'm from originally. My forefathers are I am a third generation Indian Chinese, right? लेकिन ये 50,000 बार बोलने के बाद भी लोगों को नहीं पता है, and which is all right because it's such a huge word. But my concern always has been कि why do people assume things? Yes.
मुझे उनसे बिल्कुल भी गिला नहीं है जो मुझसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, बिकॉज दे genuinely might not know. I could be anybody. I could be anywhere from the northeast. I could be Nepali. I could be Japanese. I could be Chinese. I could be from the mountains. तो कोई जो genuine curiosity से पूछते हैं, I don't mind that. But there are a lot of us who are so vicious with our comments and with the way we the names that we call the और उसमें बहुत malice you can tell एक tone में समझ में आ जाता है. And with social media that's only increased. पहले तो ऐसा होता था कि कभी अगर लोग मिल लिए कहीं से बोल दिया किसी ने, there have been many concerts in which I've been there, everybody is loving it, everybody is very pure and nice, and कहीं से कुछ कोई चिल्ला देता है, वो ऐसा कुछ सुनाई देता है, या फिर कभी कोई पर्सनली मिले तो कोई कुछ कह देते हैं, and that could be coming irrespective of whether they know you or they don't know. If they don't know you, then और भी अच्छा हो जाता है, because then they I think I have had the privilege of being protected from some racism at least because they know who I am, and because of my work, because of my background, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे already accept कर दिया, लेकिन जो मुझे नहीं जानते और especially before I came in the industry, वो काफ़ी हुआ करती थी. Now with changing socio-political situations, एक racism वो होती है जो casual racism है, जो वक्त नहीं देखती, जगह नहीं देखती, it is always there, and that will have to change from within, and which is what I try to do. I try to, as I said, it's a very light approach. I try to treat it with humor. I try to tell people कि कोई बात नहीं यार, होगी तुझसे गलती, चल मैं तुझे बताता हूँ what you should not say and what are the things that can offend somebody. And many a times you'll realize that ज़्यादातर लोग जो ये कह रहे होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता कि कुछ गलत कह रहे हैं या उसका इतना impact पड़ सकता है. So many of them actually apologize and they say कि we will take care of this, not just with you but with everybody else also. A lot of people have it very heavily ingrained, जो एक xenophobia कह लीजिए या जो भी एक fear of anybody who looks different or thinks different or is different from you, तो वो एक बहुत ingrained रहती है कई लोगों में, and उसको थोड़ा तोड़ना मुश्किल होता है, but that also has to happen slowly and steadily. That is over compounded by, I would say, also again, as I said, the socio-political climate. And anything that in any time something goes wrong between India and China, obviously I and everybody who looks like me, male or female, from any part of the country, we face the same kind of problems. Yeah. So वो सब है. There's a constant fight for it. There's a constant people like me, people in positions of influence. A lot of us हम इसके बारे में बार-बार बात करते रहते हैं और धीरे-धीरे 5, 10, 50 का गुच्छा लेके I guess लोग बदलते हैं. But it's a long-term thing, and I feel that as Indians, as Indian citizens, हम हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ingrained. It's not just about racism. It's about classism. It's about color differentiation. It's about a lot of discrimination that we do, and हमें शायद तभी realize होता है जब हमारे साथ होता है जब हम कहीं और जाते हैं. Exactly. Right? Whenever we're traveling, especially when we're traveling abroad and we face racism, वहाँ हमें लगता है कि यार इनकी हिम्मत कैसे हुई यार, so bad, ऐसा नहीं करना चाहिए. Without realizing कि हम on a daily basis घर वही करते हैं. Exactly. So जब तक हम वो realize नहीं करते और उसे बदलते नहीं हैं, तब तक मुश्किल है. It will take a long, long time, but to look at the positive side, you have to keep changing one person at a time. Okay, क्या ये negatively आपको कभी mentally toll किया है या फिर ऐसा कुछ? You have taken it as a positive, you need to change people, no matter what people will comment. The latter is also true. Yeah. पहले मुझे बहुत impact करता था. I was also a very different person back then. Before coming to Bombay. यहाँ आके obviously you find your calling, आपको इतनी confidence मिल जाती है, आप इतना काम कर रहे हैं. So that completely changes your personality. लेकिन उससे पहले जैसे मैं बहुत introvert हुआ करता था, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था. So उस वक्त ये चीज़ें मुझे बहुत bother करती थी, बहुत ज़्यादा it would pull me back, it would put me in a shell. कि अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उससे खुद को रोक लेता था. चाहे जो भी हो, it could be in any field. But since I've come here, मुझे तो पहले से warn किया गया था कि now that you're part of the industry, there's a lot of things that will come your way that you may not have thought of. So वो warning मुझे मिल चुकी थी. I was already kind of mentally prepared for it, and thankfully it's not been as much as I thought it would be. Right? The kind of acceptance that I've got in the industry, from the people in the industry, from the people in general, the public in general, it has been so overwhelming. जब भी मैं शूट पे होता हूँ या मैं तो शूट जो टेलीकास्ट होगा, फिर उसका जो रिस्पॉन्स आएगा,
जो मैं shows में जा रहा हूँ, जो live response वहाँ पे मिल रहा है, it has been so beautiful that अगर कहीं पे bitterness थी तो bitterness चली गई, which is why now I take it very light. ऐसे कि ज़्यादातर लोग तो प्यार कर रहे हैं ना, ये 1% से मेरा क्या बिगड़ने वाला है, पर फिर भी ये 1% किसी और की लाइफ बिगाड़ सकते हैं, who may be in that phase that I wasn't before. Yes. So why not try to change that? But yeah, now it does not bother me as much, but I do call it out every time it's there. Do you think कि ये बहुत normalize कर दिया people have trolling, commenting negative things, pulling down people's that motivation? I feel pulling down anybody is a sign of weakness. Yes. It's a sign of insecurity. It's a sign of वो कहते हैं ना एक envy होती है. That is what it is. There's this quote that keeps going everywhere. The quote is कि जो normal लोग होते हैं वो दूसरे normal लोगों की बात करते हैं, लेकिन जो बहुत ही evolved लोग होते हैं, they are just thinking about the betterment of everybody, and that is the only way to go forward. Pulling somebody down will never help. Okay, finally, can you tell us about a hidden talent or interest that your fans might not know about? Apart from singing, acting, hosting. Actually, pretty much सब कुछ मालूम है, but हाँ, if especially for newer fans who know me more for my acting, hosting and singing, then I also sketch very well. Oh. In fact, school के time में I was not into dramatics or anything else. I used to just do music and art. तो art में बहुत sketching करता था और मुझे comic books का बहुत शौक है. So I used to draw. Initially, I used to just copy the structures. मैं सुपर हीरोज को कॉपी कर लेता था, फिर मैंने अपनी कॉमिक्स बनानी शुरू कर दी, फिर उसके बाद अपनी स्टोरीज बनानी शुरू कर दी. दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज सबके सब मेरे टीचर्स या मेरे क्लासमेट्स ले गए. सो आई जस्ट हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दोस थिंग्स. मेरे सारे के सारे अगर नोटबुक्स आपको कहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं पे डूडल किया हुआ है, एंड यू विल सी बैटमैन एवरीवेयर. Pretty much everywhere Batman is there. There are some dragons, there are some other things, and which is why probably my whole interest towards superheroes and anime, all of that comes from there. So, can you give us a brief overview of what viewers can expect from your upcoming song? So my new song, Jhoothi Chai, मैं चाय पीते हुए उसके बारे में बता रहा हूँ. It's already out. उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया अभी. I just want the audio to be out there and for people to like it and assimilate it, क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें हैं इस गाने में, and मुझे लगता है कि जब लोग गाना सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत सारी यादें आएंगी. जब मैं ये गाना बना रहा था उस वक्त it was more like कि यार it's a nice romantic song, we're making this and it's going to be, जब आएगा तो लोगों को पसंद आएगा. But closer to the release and especially after the release, मुझे एक realization हुई कि it is coming from a very deep part of my heart. It's a very beautiful song if you listen to it. ऐसा लगता है वाह क्या romantic है, और लोगों को क्या यादें आ रही, पहाड़ों की बात हो रही है, चाय की बात हो रही है. But it's coming from a small heartbreak that I had last year. And somewhere the song is talking about all those beautiful memories that are there, and those memories of that person, that special someone, is very bittersweet because everything was nice. So all those memories about how there's एक line भी ऐसे जाती है कि है कि यहाँ पे मेज है, कुर्सियाँ हैं, बस तुम नहीं हो यहाँ. And this is the memory that I have, that the last time we did sit here. And पूरी वो जो analogy है of the relationship having blossomed and then having disintegrated, वो पूरी चाय के और बिस्किट के metaphor से सुनाई गई. So I think that if the deeper people go into it, especially those people who are in love or nursing a broken heart, they are going to really enjoy it. Absolutely, it's going to touch the hearts of millions. Yeah. All the best for your upcoming song. All wishes and luck from India Forums. Thank you, thank you. I'll just sing those two lines I was talking about. Please. बिस्कुट की तरह मैं टूट गया था, चाय में तेरी मैं छूट गया था, मैं तो वही उस प्याले में, तू ही था जो मुझसे रूठ गया था, रूठा सा वो चेहरा आज तक मुझे याद है कि झूठी चाय तेरी आज तक मुझे याद है. Wow, and that touched really much. आपका भी दिल टच है. Thank you, Chan, for joining us. Thank you for your Thank you.